Good noon, everyone. Welcome to Nifty Bank Nifty live analysis. Now, as we can see, Nifty has been moving in a range, and that is very important to understand. And even after, instead of doing a breakdown, it basically zoomed one way to the top because of Reliance. Now, after the up move, still we are having gap down movement. Apart from gap down, more importantly, it was trying to move up, and the sudden fall came in. Now, obviously, this will be a strong support zone because if we try to see prior to that, the support zones are present for Nifty at the lower end. So this now Nifty would basically is kind of entering into the support zone. And if that zone gets broken, then you can have one more round of downside. But the most important thing over here is for downside to happen, it needs to go more of sideways, and then you can have one more round of downside for Nifty. So what we exactly want over here is if Nifty kind of goes sideways, and if it goes sideways right over here, then he can break on the downside after giving a sideways structure. Otherwise, it will not give a breakdown. So that is very important to understand. So निफ्टी आज गैप डाउन ओपन के बाद काफी अच्छा बॉटम से रिवर्सल लिया था. उसके बाद में आप देखोगे कि शार्प सेलिंग आ गई और अब वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन में निफ्टी है. सो वहां से काइंड ऑफ रिवर्सल आना या बाइंग आना नॉर्मल है, और इसी वजह से इसका अगर कंसोलिडेट करता है यही जोन में और ज्यादा ऊपर नहीं जाता है तो आप सेलिंग के लिए फोकस कर सकते हो फॉर निफ्टी. सो निफ्टी को आप सेल के लिए ट्राई कर सकते हो. और मोर इम्पोर्टेंटली हमें ये देखना है कि ये जो हायर जोन है मोर और लेस 16,130 और 150 जहां से सेलिंग आई थी, ये जोन में अगर वो ऊपर नहीं सस्टेन कर पाता है तो वहां से फिर से सेलिंग आ जाएगी. सो ये जोन वेरी क्रिटिकल जोन फॉर निफ्टी इज 16,120. सो 16,120, 16,130 is a very strong kind of resistance zone for Nifty. And as I said, Nifty is kind of having a strong support zone at the bottom. So that is also very important to understand that it can get sharp reversal from these areas. So you can look for buying opportunity, but more than that, if it goes sideways, then you can go for the sell trade. So the entire idea over here is to either wait out, let it go into the resistance zone and go for sell trade, or I would suggest that if it breaks on the downside and then we get the buy trade, so we can go for buy trade as well on the upside. So that is very important. So एक चीज जो आप निफ्टी में देख सकते हो कि या तो रेजिस्टेंस जोन में आने दीजिए या तो उसको सपोर्ट जोन में आने दीजिए, और दोनों जगह पे आप रिवर्सल ट्रेड पे फोकस कर सकते हो. वेल निफ्टी अगर डाउन साइड मूव में है, बट बैंक निफ्टी सॉलिड मूव है, एंड अपसाइड जो आया है निफ्टी में इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द बैंक निफ्टी. सो वी विल फर्स्ट ट्राई टू सी द डायनामिक ओआई एज वेल. सो एक बार डायनामिक ओआई के थ्रू भी अगर हमें समझ में आ जाए कि ऊपर हायर रेजिस्टेंस है या नहीं है तो एक क्लैरिटी आ जाएगी. सो इफ यू ट्राई टू सी ऑन द हायर एंड फॉर Nifty on the dynamic OI, so currently market is trading at 16,100. Now if I go for 14 July OTM options, okay, and 16,100 is the huge OI around 80,000, plus if you see on the higher side 200 and 150 also huge OI is there, and downside there is no support, and that is why we are very clear from 100 to kind of 200. So this zone is a very strong resistance zone for Nifty. Okay, so we need to be very clear, this is the strongest resistance zone for Nifty, and we need to be looking for sell trade in this area. So I would be looking for sell trade in this area if it goes on the higher side. Okay, so we look for the sell trade over here in this area for the downside in Nifty. So Nifty अगर एक रिवर्सल लेता है 16,100, 150 के जोन में, 120, 130, 150 के जोन में जहां पे रेड जोन है, वहां से आप एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो निफ्टी के लिए. तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, और वहां से जोन से रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा रहेगा. और यहाँ पे अगर नीचे आ जाता है तो यहाँ से आप बाइंग देख सकते हो 16,050 के जोन में, जो प्रायर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट भी रहा है.
So this is how we will try to track for Nifty and Bank Nifty both. And now the idea would be to look for Bank Nifty. Now Bank Nifty has been strong right from the morning, and more importantly, if you actually see the strong up move which happened yesterday, the price opened gap down into the important support zone, and it tried to move on the higher side. And more importantly, what we can see over here is a strong rejection on the downside, and we have a strong buying zone for Bank Nifty right at this point. So one thing is very clear, there is a strong support zone for Nifty, Bank Nifty around 35,200. So if I try to see this zone, entire zone over here is a strong support zone for Bank Nifty. Unless this is not broken, Bank Nifty will have no downside. So there is a difference between Nifty and Bank Nifty. Nifty looks weak compared to Bank Nifty, and Bank Nifty until 35,200 is not broken, there is no downside. So Bank Nifty में अगर आपको मंदी करनी है तो 35,200 के नीचे ही आप मंदी कर सकते हो, बट प्रॉब्लम उसके साथ एक और है कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में जाएगा तो यहाँ से कभी भी शार्प बाइंग आ सकती है, जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे शार्प सेलिंग आया, यहाँ पे बाउंस करके यहाँ पे जो बाइंग आई है, इस तरह की बाइंग शार्प बाइंग आ सकती है. सो ये फोकस हमें करना है कि अगर ये अपर जोन में जाता है वहां पे आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो. तो अगर मुझे बैंक निफ्टी में सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो मैं चाहूंगा कि बैंक निफ्टी फिर से आज के मॉर्निंग हाई के जोन्स में आए और वहां पे आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो. सो आई वुड बेसिकली वांट बैंक निफ्टी टू कम बैक into the higher area, and if the bank nifty kind of comes back into this zone, then we look for selling opportunity from this area. Or if it goes down over here, okay, we can basically look for selling, but the selling is basically risky on the support zone because support zone is very, very strong at the lower area. So ideally we can also look for reversal on the buy area over here. So market is going to trade in a range, and obviously we have the good inflation data coming in, and as well as the Fed meetings which are there tonight. So that will also give a little bit of pressure on Indian markets. So ideally, if you try to see, I would like to wait for him to go sideways and go for up move, or let him rise to the higher zone fast, and then I try to look for reversal. Somewhere selling Bank Nifty on the higher zone is only a good idea, and selling Nifty is also a good idea only in the higher zone. Let us try to see the dynamic OI. So one thing is very clear, they have already moved into important support zone, Nifty and Bank Nifty. So we are waiting for the sell area to come through, and then we try to go for sell. We can see 35,300 has the huge OI plus 35,200 little bit. So 300 according to me is a very strong zone which we need to watch out for. And this again we can see this is the strongest area right now, which is around 300. So I would basically try to look for sell structure in this area as well. So somewhere what we can see from Nifty and Bank Nifty, there is a lot of selling pressure which is there on the higher end, and even if they are trying to bounce back into the resistance zone, there can be sharp selling which can come by. So let them rise higher around this zone, and if it sustains above these zones and then comes back down below 35,300, तो आपको अगर सेल करना है तो 35,300 के नीचे सस्टेन करता है तो ही आपको सेल करना है, अदरवाइज आपको सेल नहीं करना है. दूसरा, अगर वो नीचे आ जाता है ये एरिया में सेल मत करिएगा, बिकॉज यहाँ पे एक डाउन टिक आ सकता है बट शार्प अप मूव आ जाएगा. जिस तरह से आपने यहाँ पे देखा एक शार्प अप मूव आया था, उसी तरह से एक शार्प अप मूव वापस कोई भी अगर फॉल आता है वहां से एक शार्प अप मूव आ जाएगा. So rather than trading Bank Nifty, I would suggest to trade Nifty. So Nifty actually weak लग रहा है, और अगर ये हायर जोन में जाता है तो आप निफ्टी पे फोकस कर सकते हो सेलिंग के लिए, क्योंकि वहां पे दो चीजें काफी अच्छी है फॉर निफ्टी. एक तो हायर जोन में सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, नंबर टू अगर वो नीचे आ जाता है तो भी आपके पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, वहां से आप बाइंग के लिए भी देख सकते हो. सो आई वुड सजेस्ट फोकस ऑन निफ्टी ऑन द हायर साइड, ट्राई टू लुक फॉर सेल, and on the lower side try to look for buying opportunity. That's it for today. Thank you very much for joining in, and do make sure that you like and subscribe our channel for all the timely updates.